Hi students, in the last lecture we have seen the bread seller problem. So where we have to decide the number of product he should keep in a stock. So today we will see the problem on a decision tree. So we have to plot the decision tree, and at each node value we have to calculate the expected monetary value, and we have to decide which decision we have to take. Now today we will see the two problems. One problem is of a maximization and another problem is of a minimization. So let's see the problem. So here manager has a choice between, so there are one manager having two options. First option is a risky contract promising 10 lakh rupees profit with 0.6 or probability 60%, and rupees 6 lakh with a probability of 0.4% or 40%. And second option is a diversified portfolio consisting of two contracts with independent outcome, each promising 5 lakh with 60% probability and 3 lakh with the 40% probability. So here if you check in the first option 6.6 and 0.4 means 100% probability is there. In the second option is also 0.6 and 0.4, that means 100% probability. So construct a decision tree using expected monetary value. EMV is nothing but expected monetary value criteria. Can you arrive at a decision using EMU criteria? Yes, we will arrive at the decision. We will arrive. No problem. So we are having a two options. Now let's understand the problem. One manager, एक मैनेजर है, उसके पास दो ऑप्शन है. So we will start from this point. Suppose so this is a node 1 and we will start from this point. उसके पास क्या ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन है, one option है is a risky contract. So he will take a risky contract, and another option है diversified portfolio. So these are the two option portfolio. So these are the two options. So we have started with this node number 1 and he is having a two option, risky contract and diversified portfolio. Now in the risky contract, so here I will start with the node A because it is in the risky contract. So this is the node A. So in the risky contract he will get a 10 lakh rupees profit with probability of 0.6 and 6 lakh profit with a probability of 0.4. So again from this end there are again two options. So first option he will get a 10 lakh rupees profit. So I will write it 10 lakh rupees profit where probability is a 0.6, and another option you will get the 6 lakh with a probability of a 0.4. So these are the two options. Now this is with the risky contract. Now we have to calculate with the diversified portfolio. Now in the diversified portfolio, so here in the diversified portfolio I will start with the node B, and in the diversified portfolio two contract with independent outcome, rupees 5 lakh profit with probability of 0.6. So here one option is, here he will get the 5 lakh profit and the probability of that is a 0.6, or another option is rupees, what is the answer, 3 lakh with the probability of 0.4. So here 3 lakh with the probability of a 0.4. Now here we have drawn the decision tree. Now he is having a two option, risky contract and diversified portfolio. In the risky contract he should get the 10 lakh profit but probability is 0.6, or 6 lakh profit but probability is 0.4, and in the diversified portfolio 5 lakh profit probability is 0.60 or 60% and 3 lakh probability 0.4 or we can say 40%. Now we have to find out which decision he should take. He should take risky contract or he will go with the diversified portfolio. Now from these 2 points we have to take the decision. Now for that we have to calculate the expected monetary value at each node. So at each node, suppose we are calculating this at node A. So I will write here, suppose I will use another color, black color. Suppose at node A. So at node A, so how to calculate the expected monetary value? So we can say EMV at node A. So here we are calculating this 10 lakh into 60% or 0.6 into 10 lakh plus 6 lakh into 40% probability. So 0.4 into 6. If you solve this, you will get that this is a 6 and this will be the 2.4. So 6 plus 2.4, or we can say 8.4 lakh. So this is expected monetary value at node here. So 8.4 lakh is the profit at node A. So when we go with the risky contract, now here we will calculate at the node B.
So for node B, again by using the same method, we can write EMV at node B. So here probability 5 lakh 0.6 into 5 plus 0.4 into 3. So here 3 lakh plus 3 into 4 1.2. So this will be the 4.2 lakh. So here you will get the 4.2 lakh is the profit at node B. Now we are calculating in this direction. From 10 lakh we have come to the node A where 8.4 lakh. When we go with the risky contract and if we solve this, we will get the 8.4 lakh profit. If we go with the diversified portfolio, here it will give the 4.2 lakh profit. Now we have to reach up to this decision or this node. So here 8.4 lakh profit or 4.2 lakh profit. So we are selecting the profit. Profit is a maximization problem. So we will go with the 8.4 lakh profit. Means from these two decisions we will select the risky contract where it will give the maximum profit of 8.4 lakh. So this is a problem of the decision tree where this is a maximization type of a problem. So in this you can write the answer. So EMV at risky contracts, you can write the answer. EMV of risky contract is high, so should take the risky contract. So contractor should take risky contract because it will give the maximum profit. So that is a 8.4 lakh by going the all the ways, by considering the all the probabilities. So this is one type of a problem. This is a maximization problem. Now we will see the another problem is with the minimization problem. So here this is another problem of a decision tree. Now here the problem is Mr. Sinha had to decide whether or not to drill a well on his farm. Okay, in his village, so here you can say only 40% of the well drilled were successful at 200 feet of depth. So consider करो कि मिस्टर सिन्हा है, उनको बोरवेल ड्रिल करनी है, तो बोरवेल ड्रिल करनी है उनके फार्म में. So there is a probability of 40%. So where it will be successful means 200 feet जाने तक जो वाटर स्ट्रक होने की प्रोबेबिलिटी है वो 40% है उनके गांव में. कंसिडर करो, दिस इज वन कंडीशन. देन सेकंड कंडीशन इज सम ऑफ द फार्मर हु डिड नॉट गेट 200 feet ड्रिल्ड फर्दर अप टू द 250 feet बट ओनली 20% स्ट्रक द वाटर एट 250 feet. अभी उनमें से जिन्होंने 200 feet तक गए उनको वाटर नहीं मिला, वो 250 feet तक गए, आगे 250 feet तक ड्रिल किया, बट वहां पर भी पानी मिलने की प्रोबेबिलिटी 20% है. सो पॉइंट वी कैन से द 0.2. सो बट ओनली 20% स्ट्रक द वाटर अप टू द 250 feet. नाउ कॉस्ट ऑफ ड्रिलिंग इज ₹50 पर फुट. सो पर फुट कॉस्ट है ₹50 ड्रिलिंग की. नाउ और देयर इज अनदर ऑप्शन. मिस्टर सिन्हा एस्टिमेट दैट he would pay ₹18,000 during 5-year period in the present value term. मतलब उनको जो 5 साल के लिए पानी चाहिए. So 5 years he required the water. So for that there is another option. He will pay the 18,000 to his neighbor and he will buy the water from neighbor. Or another option is drill the well up to 200 feet. If water not struck, go to the 250 feet. So there are the two options with the Mr. Sinha. If he continues to buy water from his neighbor rather than go for a well which could have life of a 5 year. So Mr. Sinha has a 3 decision to take. So he should drill up to the 200 feet, or if no water is found, go up to the 250 feet, or should he continue to buy the water from neighbor. So Mr. Sinha के पास 3 ऑप्शन है. एक तो 200 फीट तक जाएगा, 200 फीट तक जाएगा, पानी मिला तो ठीक है, अदरवाइज नेबर से पानी परचेस करेगा. और 200 फीट तक पानी नहीं मिला तो 250 फीट तक जाएगा, पानी मिला तो ठीक, नहीं तो 250 का खर्चा गया प्लस वो नेबर से बाय करना पड़ेगा 18,000 देकर. तो इसके लिए हमें डिसीजन ट्री ड्रॉ करना है और हमें डिसीजन लेना है. सो हाउ टू स्टार्ट ड्रॉ. सो वी विल स्टार्ट विद द नोड ए. सपोज here I am starting with the node 1. Okay, so from this node 1 there are 2 options. So first option is to drill the well and second option is buy from a neighbor. So neighbor से buy करेंगे तो 18,000 तो उसका जाने वाला है neighbor को पानी देने में. So 18,000 वो neighbor को देगा और पानी लेगा. So this is a one option. And another option is a drill the
well. So drill the well. Now here there are again two options. So in the drilled well, so he will drill up to the 200 feet. So first option is drill up to the 200 feet. So where water struck probability is a 0.4. So 40% is the probability that is given in the problem. So where water can be struck. So water पानी मिलेगा इसकी probability 0.4 है. मतलब पानी ना मिलने की probability कितनी होगी 0.6 और 60% there will not be water struck. Okay, so this is a another option. Now here 0.4 अगर पानी मिला तो यहाँ पे वो पानी यूज करेगा, नेबर से पानी लेने की जरूरत नहीं है. बट अगर 200 फीट जाने के बाद भी अगर पानी नहीं मिला, मतलब यहाँ पे आ गए हम, ये नोट 2, मतलब यहाँ पे वाटर नॉट स्ट्रक, पानी नहीं मिला तो वो क्या करेगा, तो उसके पास फिर दो ऑप्शन है, 250 फीट तक जाओ, 250 फीट तक जाओ और स्टॉप कर दो. यहाँ पे स्टॉप कर दो 200 फीट जाने के बाद और नेबर से बाय कर लो. अगर 250 फीट जाने के बाद भी वहां पे दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है. क्या हो सकता है, तो यहाँ पे नोट बी, 250 फीट जाने के बाद पानी मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 20% है. प्रॉब्लम में दिया हुआ है 20% स्ट्रक द वाटर स्ट्रक प्रोबेबिलिटी इज 20% और वी कैन सी द 0.2. एंड दूसरा ऑप्शन हो सकता है नो वाटर. सो उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होगी 0.8, बिकॉज 2 का 20% मिलने की है तो 0.8 नॉट मिलने की, 80% नॉट मिलने की हो जाएगी. तो अगर वो 250 तक जाएगा तो पानी मिलेगा तो ठीक है, नेबर से नहीं लेना है. अदरवाइज 80% प्रोबेबिलिटी ना लगने के, यहाँ पे 250 फीट जाने के बाद भी पानी नहीं मिलेगा तो वो पैसा जाएगा, प्लस नेबर से तो लेना पड़ेगा पानी क्योंकि उसे पानी की जरूरत है. सो दिस इज अ फाइनल डिसीजन ट्री. वी हैव ड्रॉन द डिसीजन ट्री. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द expected monetary value at each node. So here we have to calculate at this node B, node 2, node A and then node 1. So we have to take a decision, he should drill the well or he should buy from the neighbor. So these are the two options he is having. Now for that 18,000 when buying from a neighbor, 18,000 is going. So here we have to calculate expected monetary value for drilling and which one is less, so that option we have to select because this is our cost option. In the previous problem there is a profit, but here this is a cost problem, so we have to minimize the cost. Now how to calculate the expected monetary value? So for that I will minimize, zoom out this. So here, so we will start with this point B. So expected monetary value for point B. So यहाँ पे point B पे क्या है, वाटर स्ट्रक मतलब क्या है, पहले हमें 50 फीट उसकी कॉस्ट है ₹50 पर फीट, ये कॉस्ट है. मतलब अगर हम 200 फीट तक ड्रिल करेंगे तो इंटू 50 हमारी कॉस्ट जाएगी 10,000. ये 200 फीट तक ड्रिल करने की कॉस्ट है. अगर हम 250 फीट तक ड्रिल करेंगे विच इज हैविंग ₹50 पर फुट, सो 12,500 तो हमारी कॉस्ट जाएगी ड्रिलिंग की अगर हम 250 फीट तक जाएंगे तो. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, नो वाटर, 250 फीट के बाद भी अगर पानी नहीं मिला तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे 250 फीट तक हम यहाँ पे गए, मतलब हमारा 12,500 रुपए तो खर्चा हो ही गया है. और हमें फिर भी कहाँ से लेना पड़ेगा पानी, नेबर से लेना पड़ेगा 18,000 रुपीज देकर. मतलब यहाँ पे टोटल हमारा खर्चा हो जाएगा 30,500. 250 फीट तक गए, पानी नहीं मिला, 12,500 तो गए, प्लस 18,000 नेबर को देना पड़ेगा, मतलब 30,500 यहाँ पे कॉस्ट हो जाएगी इस नोड पे. अगर यहाँ पे 250 के बाद जाकर पानी मिला तो हमारी कॉस्ट कितनी जाएगी, 12,500 ही जाएगी. हमें पानी मिल गया है तो हम वो पानी यूज कर लेंगे. So now here expected monetary value at B is nothing but this 12,500 into probability of 0.2 plus this 30,500 into probability of a 0.8. So here you will get a 26,900. If you solve this you will get the answer 26,900. means यहाँ का expected monetary value आ गया आपका 26,900 at point B. Now we have to calculate. Now here we have gone up to the 200 feet and हमने 200 फीट जाने के बाद स्टॉप कर दिया है. मतलब 200 फीट का हमारा खर्चा 10,000 रुपए था, यहाँ पे 10,000 है, प्लस हमारा क्या हो जाएगा 18,000 जो नेबर को देना है वो देना पड़ेगा. मतलब इस नोड पे अगर हम 200 फीट जाके स्टॉप करते हैं तो हमारा खर्चा आ जाएगा 28,000. ओके, एंड हियर हमारा खर्चा है 26,900.
तो हमें कॉस्ट तो मिनिमम करनी है, तो इनमें से जो मिनिमम है 26,900 और 28,000, सो इनमें से जो मिनिमम है वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, हमें 250 फीट जाना था या स्टॉप करना था। सो इनमें से जो मिनिमम है 2600 और 28,000, so here we can take a minimum is 26,900 is a minimum, so this is at point 2. Now again here we have to calculate the expected monetary value at node A. So at node A मतलब हम 200 फीट तक गए हैं और पानी मिला है, तो हमारा खर्चा हो जाएगा 10,000 यहाँ पे हो जाएगा, और इस ऑप्शन पे हमारा हो गया है 26,900 हमने निकाला है। तो इनमें से जो मिनिमम है अभी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, सो 0.4% प्रोबेबिलिटी वाटर स्ट्रक की है, मतलब यहाँ पे 0.6 प्रोबेबिलिटी नॉट वाटर स्ट्रक। So expected monetary value, I will rub this and then I will write. So here expected monetary value for this node A. So for expected monetary value at node A, so at this point, so here 10,000 into 0.4% probability plus this 26,900 into 0.6, 26,900 into 0.6. If you solve this, you will get the answer of here 20,140. So 20,140, if you solve this you will get the answer 20,140. So node A पे हमारे expected monetary value आ गई 20,140. Now this is a cost problem, we have reached to the up to the node A. तो यहाँ पे हमारा 20,000 खर्चा होने वाला है, और अगर हम नेबर से पानी बाय करेंगे तो 18,000 खर्चा होने वाला है। दिस इज कॉस्ट प्रॉब्लम, सो वी हैव टू डिसाइड ड्रिल वेल और फ्रॉम नेबर। अगर हम ड्रिल वेल करते हैं, ये सब प्रोबेबिलिटी, बाकी की प्रोबेबिलिटी ये सब कंसिडर करके हमारा सब खर्चा 20,000 जाने वाला है, 20,140। अगर नेबर से बाय करते हैं तो 18,000। सो वी हैव टू सिलेक्ट द मिनिमम, सो बिकॉज दिस इज अ कॉस्ट प्रॉब्लम, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। सो 18,000, that means answer of this problem, we can buy water from neighbor with a 18,000 rupees cost, because expected monetary value is 18,000, which is less than this 20,140. So this is the answer of the problem. Okay, thank you.